Hey everyone, so I'm super excited that we are finally starting our Flutter Developer Bootcamp. I'm sorry that the course is little delayed because I had my other project deadlines, but from now on we're gonna release videos consistently and regularly. So, by the way, if you guys are new to this channel and don't know what's happening, we are running a Flutter Developer Bootcamp where I take you from a complete beginner to a full-fledged developer. Okay, so the course is divided into three parts. First is UI Masterclass, second is Full Stack Flutter Developer, front end plus back end, and third is my expertise where people pay me a lot. So that is advanced integrations like integrating Flutter with Web3, AI, and stuff. Okay, so this is the part one, and in this video we will learn about Dart language essentials, and in the next video I'll give you a brief tour on how Flutter was born, and also how you can install VS Code in your local system, and also how you can install Flutter in your laptop, desktop, whatever. Okay, so without wasting further ado, let's begin. So first of all, so in this video we will learn about Dart. Okay, so we'll learn about introduction to Dart, then basic syntax, how to write in Dart language. Then we'll learn about control flow, if else statement, functions, object oriented programming, collections like maps, list, array and stuff. And then we'll look at error handling, taking data from servers, so how you can handle errors during that process and stuff, try, catch, block, and all. And then finally we will jump into code. So I have divided this video into two parts. In the first part I'll give you a gist on how you can first part is divided into theory, so you can easily learn about each concept, and in the part 2 we will dive deeper into code. So I'll solve some questions in front of you and will give you some assignments as well, so that by the end of this video we must know Flutter, we must know essentials of Dart end to end, so that we can easily learn Flutter and build mobile apps. Okay, cool, let's begin. Okay guys, so before we actually start studying, just quick tips to actually increase your productivity. So first of all, I want you guys to sit and relax and watch the video at one go, like a web series, actually like a web series. So just turn off the lights that are around you, plug in those earphones, and get a sit for an hour with a bottle of water. So stay hydrated. Being hydrated actually helps you in retaining things a lot. And most importantly, why I'm saying watch this video at one go is because when you end up making a 1 hour tutorial into a 4-5 hours, your inspiration drastically decreases. It has happened to me. I have committed this mistake a lot of time. So the best way to actually study is to watch a tutorial at one go, and once you are done with it and want to practice, then come back to it, watch those snippets, whatever you want to, and then code along. So the ideal way to actually study is first of all watch the video at one go, and once you are done with that, then watch some snippets to get some gradual help or stuff. And it's fine, it's part of the process. If you don't get everything from the start, it's fine, it's totally fine. And most important that I want to tell you is DYOR is possibly the number one skill for all developers. What does DYOR means? Do your own research. Okay, this is actually the most important skill that you guys need to inculcate in yourself. And my motive with this Flutter Developer Bootcamp is I should enable you guys to adapt to any language possible. You must have a high adaptability. Okay, you don't need to retain anything. Everything that I teach you here can be found on the internet, but most important thing that you cannot find on internet is the concepts. You need to have your strong fundamentals. So in this tutorial we will learn the essentials of Dart. I won't get much deeper or depth into the Dart, but I will give you the essentials that you need, and after that foundation we can build on top of that whatever you need to study. Okay, so just look at this meme. On day 1 of programming you will be searching for the same query, and day 10 of programming you will be searching for the same query. I myself is doing Flutter for the last 2-3 years, and I have friends from industry who have been doing this for 10 years, and they still search for the same query every time on either Google, ChatGPT or anything. So it's totally fine. Just keep these 4 things in mind. First, sit and relax,
watch this video as one go, like a web series. Plug in your earphones, dim light, get a bottle of water, chug it in 1 hour, and then we are ready to go. Let's begin. So first one is introduction to Dart. So let's first understand what is Dart. So as written, Dart is an open source general purpose programming language. So first of all, let's understand what is actually a programming language. Okay, so let's say this is me. Okay, this is me and this is you, and we are communicating in a language which is right now is English, and you also know English and I also know English. So there is a consensus between us. You can understand what I am communicating to you. In the similar fashion, there must be some language to interact with machines as well. I'm sorry if you find this human very weird. Okay. Anyways, so these languages are actually, there are a lot of languages in the scope. So for example, let's say JavaScript, C, C++, Python, but Flutter actually used Dart language. And in the next slide, we'll learn why Flutter used Dart. So you can see Dart as one of those languages that is used to interact with the machines. And what are machines? Machines are your laptop, desktop, mobile phone, Android and stuff. Okay. So what's special about Dart is using this single language, you can actually write code for mobile, desktop, server, web app, doesn't matter, it's Linux or Mac OS or iPhone or Android, whatever. Okay, so using that single language, you can write code for anything. And third most famous part is its strong support for asynchronous programming and strong typing. So if you don't understand asynchronous programming as of now, you will get it. Just bear with me. By the end of this tutorial, we will get a sense of what is async programming. And if not, then async programming is actually used in building the mobile app a lot. For example, taking data from online servers. So just bear with me. You will understand everything. What is strong typing and what is asynchronous programming in the later part of the video. So here you can see with Dart VM's instant hot reload. So this is also actually one of the most important and crucial feature of Dart. So for example, when I'm writing the code, when I basically tap on hot reload, my changes are instantly reflected on the mobile phone. It is hard to convey what it means. So when we start building the mobile app, I'll show you what hot reload, hot restart means, and this is actually a big deal. Okay, so I'll teach you there. So as I said, there are a lot of programming languages such as JavaScript or C or C++ or Python, but Google chose Dart only to build their framework. Why? There must be a reason. So these are three most important reasons why Google chose Dart. But I think the most important reason that's not listed on Dart's website here is actually Flutter. This Dart language was also built by Google. So Google was actually planning to launch Flutter framework from 2010 or 11 when iPhone was launched. I'll tell you more about it in the next video, how Flutter was born. It's very, very interesting. Okay, so actually the way Dart language was built is in order to cater Flutter framework as well. So for example, there are two types of compilation, just in time versus ahead of time. So in just in time compilation, your code is actually compiled on the web. Okay, and in ahead of time compilation, your code is actually compiled to the machine, like directly to the machine. So this is actually the reason why Flutter has faster performance than its competitors, like React Native and stuff, because it directly compiles your code in ARM or cross 64 machine code. If you don't understand it, it's fine. You will get more. You will get to know more about it in later part of the video. I'm just telling this to you right now because I was curious by nature. Like I always used to ask this question: why Dart? Why only Dart was used to, you know, uh, build Flutter framework? So this is the reason why Dart was chosen. I hope somebody taught me this in my time, so that's why I'm just teaching you. Okay, cool. So
Now let's understand basic syntax. So in this we learned what is Dart. Dart is an open source general programming languages developed by Google. And why Dart? Because it is easier to build UIs on top of Dart. It has inbuilt functions to create UIs for any platform, Android, iOS, whatever, and it's fast as well. So that's why we used Dart. Just keep in mind this ahead of time. This is actually a big deal. Awesome. Cool. So now let's learn about basic syntax. So what is actually a syntax? So if you compare this in English language, there are a lot of keywords such as adverbs, verbs, adjectives, and tenses and stuff. So similarly, there are some rules and protocols in languages as well. So we'll look at those terms. So first term is variable. So what are variables? Variables are used to store data. So we will look into it. And in Dart, you declare a variable using var keyword. You can specify a type like int, double, string, or bool. And this is actually the correct way to define a variable. So I have given you two examples here. First example is variable name equal to John. And second example is string name equal to John. By the way, if you guys don't know what is int, what is double, what is string, it's not that difficult. So int means integer, double means values with decimals, but it has more higher constraint. So you don't need to know much about this as of now. We'll learn about it while we are building the mobile apps. And string is actually used for writing alphanumeric characters. So here you can see that I have written John. So what is a string? It can get any form of alphanumeric characters. So for example, it can get a John @ 1 2 3 special characters as well. So this is also a string. Okay, cool. So now let's look at this code once. Okay, here you can see I have defined int a equal to 10. So what does it mean? I have defined an integer a whose value is 10. I think this is pretty easier to understand. And I have here defined a variable whose variable name. So look at it. Okay, so the variable name is Steve. So here this is known as dynamic initialization. Okay, this is known as dynamic initialization. So there are two type of initializations, dynamic and static. So this is actually static initialization string, and this is dynamic. So the correct way to define any variable is actually using static initialization. So like defining the int, double, string, or not static, but I would say strong typed languages have this thing. So here the interesting part is when I use these apostrophes, so it got to know that it is a string. So it dynamically rearranged itself by saying to the machine, okay machine, name is actually a string. In the similar way here, I have already defined string as a data type. So I can define, so for example, if I have written 1 here, so it would have, the compiler in the machine would have given me an error key. Machine, this is actually a string, so you can't define integer here. So you will get to know more about it in later part of the video. Again, it's fine if you're not getting most of it. I hope you're getting 40% of it. Okay, so cool. So here print a means that 10 will get print name means Steve will get printed, and print place means London will get printed. Cool, awesome. So now let's look at what are operators. Okay, so operators are symbols that represent computation. So what are operators? Like since our first class, we are actually learning operators like plus, addition, subtraction, division, and I don't like to call it division but more like quotient, and I have a good reason for that. I'll tell you just now. And there are multiple operators, for example multiplicative operators. So here multiplication is denoted by a star instead of this. We don't use this. This is wrong. I don't know how to tell this. This is wrong. Okay, this is wrong. Okay, so you use star to indicate multiplication here.
So for example, here defined a variable sum. Again, sum is actually an integer. 5 plus 10 is equal to 15, so that's why variable sum will become an integer. So now let's look here. Okay, so int a is equal to 10 and int b is equal to 20. So what a star b will print? Okay, give me the answer. So what does a star b means? 10 into 20, so its answer would be 200. What does b slash a will print? So it's like, what does 20 slash 10 will print? It will print 2, because that's why I call it quotient operator. So in division, if you know, these are very basics. Let's just say this is 5, this is 10, and when I divide, this is known as dividend, this is known as divisor, and when you divide 10 by 5, the quotient you get is 2, and the remainder you get is 0. So this is actually more like a quotient operator. I like to call it quotient operator because when you divide 20 by 10, you get the answer 2. So it will print the answer 2. But there must be an operator for finding the remainder as well. For example, if this division was, let's say, 10 divided by 3, so the remainder is 1. So how do I know, like, what is the remainder here? That's where you use the operator modulo. Okay, so what does this mean? Here b is 20, a is 10, so 20 modulo 10, what would it be? 0. The remainder would be 0, so here it will print 0. Similarly, I have defined two strings here, hey and what's up. So I want you guys to try it yourself. Okay, what does hey plus what's up will print? So this is not a integer, so what it print? Okay, I want you guys to try it. Awesome. Now look at more. There are actually a lot of operators that use, but I want you to focus on these operators. First is multiplicative operators. Here there are all types of arithmetic operators, like, you know, multiplication, division operator, modulo operator, and this is integer division. We'll use it later if you don't know it yet. This is additive operators, addition, subtraction. This is you don't ever gonna use. This is actually used in data structures and algorithms, but we won't dive into data structures and algorithms as of now. Okay, so this, you don't need to study this, not needed. No, this is needed, I'm sorry. This is very, very important. So this is comparison operators. For example, is if I print this, 5 is greater than or equal to 10, this is actually will give me false. So these operators give me a bool answer. Okay, so these are comparison operators. You will get to know all of these operators when we actually start coding. Okay, this is equality operator, this you must know, this is you must know, this one. And logical AND is also used, this one is also used, this one is also used, this one is also used, and we won't use this ever, and we won't use this as well. So yeah, that's it. Now let's look at control flow. So if I'm going a little fast, then let me know, or if I'm going a little too slow, then also let me know. I'm just trying to give you gist of Dart essentials as quickly as possible so that we can start coding. And when I write code, you will get a lot of clarity, like whatever we have studied here in the theory. So that's why I'm going a little faster. Okay, but you can tell me in the comments, like, Yaten, please slow down a bit, so I'll slow down. Anyways, now let's look at control flow. So if I want to define certain conditions that let's say if the age is greater than, for example, let's consider you are going to a party, okay, or you are hosting a party and you want it, okay, again, very bad human, I'm so sorry. Yeah, so for example, you are hosting a party, and in that party you want only the people whose age is greater than 18 or equal to 18, or so-called adults. So if you are an adult, you are actually allowed in the party, and if you are not an adult, then you are not allowed in the party because you are a minor. So that's where we use if else statement. So if age is greater than or equal to 18, so this will return that it is true, and if it is true, then print this, and if it is false, else print this. Okay, so yeah, that's where we use if else statement. And then there are loops. So for example, if I'm doing a thing
iteratively multiple times the similar thing. For example, let's say I have to print hello 5 times. So I won't try and print 5 times like hello, hello, hello. Instead, I would just run a loop. So 0, 5. So how does a loop work? So let's say here I have defined a variable I equal to 0. So this variable I is actually an integer because we have defined its value 0. So it will check is 0 lesser than or equal to 5, and if it is correct, then it will go inside the loop statement and it will print hello to me. Okay, then it will check again, and then this condition will happen. So for example, once 0 is greater than 5, all conditions are over, then I value will actually become I plus plus, which is I value will become 1. So is 1 lesser than equal to 5, again it will print 5, and once these values are actually equal to 5, it will say 5 is equal to or less than 5, it will say no it is not, and will get out of the loop. So this is how loop work, and it's fine if you don't understand as of now. We'll learn more about it in the later part of the video. Cool. Now let's look into functions. So let's understand what are function actually. So you can consider function as some magic box, okay, where you give some inputs, okay, and it will give you an output. So let's consider an example, okay. So let's say you are brewing coffee, okay. Let's just say this is a coffee funnel and there are some buttons in it. I'm so sorry for my drawing. And you define, okay, this much I want it to have this much fine granules, and I want the taste to be a little darker and stuff. So this is our actually input. So you are providing machine an input ki this is how I want my output coffee to look like. So this is how you want your end product to look like. So this all happens as a code which is actually called function. Let's look further to understand it more, how it works in Dart context. Okay, so just like how I said, functions are block of code that can be defined and called by name. So let's say here this is a function. So I have here called a function greet. So it will now go to the greet function. So here greet function has an input which is string name. So that's why I have given an input here as well, Alice. So name is an input Alice. So what it will print? It will print me hello Alice. Okay. Now let's look at another variable sum equal to add. So this is actually without return type. So this is a function which is actually not returning anything, okay, to me. But this is a function that is actually returning me a value as well. Let's look at an example. Here I have defined a variable sum which is actually do nothing but summation of two variables. So I have defined here two inputs 5 and 10, and it has asked for two inputs as well here 5 and 10, and it is returning me their output 5 plus 10 which is equal to 15. And that's why I have defined a variable here as well which is taking its input, taking the return value that is thrown here by the function and storing it inside a variable and then printing it. So its output as mentioned here will be 15. So that's how a function works. And you don't need to know everything about it as of now. You will understand it more when we actually jump into code and when we start building mobile apps. Okay, cool. Now let's look at object oriented programming, and this is very important. So what is actually object oriented programming? As the name suggests, this is actually related to objects. So there is an object, and around that object all programming is written. So for example, this was actually built to cater real world needs. Okay, all of that we have studied until now was called functional programming, because we define functions and stuff, and it is more or like a functional
programming. Okay, and from here we will look into how object oriented programming work. I'm just giving you a gist. You might not need to understand everything as of now, but you might need to know the fundamentals. So there are two things in object oriented programming: classes and objects. Classes are blueprint for objects, and objects are instances of classes. So you can take it as, for example, there is a, let's consider a car example. Okay, here let's consider there is a car. Okay, this is a car. I hope this is a car, and this car, we have defined a property for this car: color. Okay, what is the color of this car? And we have defined a function as well here. Okay, drive. So whenever the user tries to drive this car, it will print vroom, the sound vroom vroom. Okay, and here I have used and defined an instance of the class which is actually called objects. Okay, objects are instances of classes, as I have said here. So here I am defining my car dot color. So my car has a color here, right? Here, car has a color, and we are defining the car of the color to be red. And when I am calling this function my car dot drive, it will print me an output vroom, because whenever user taps on this function vroom, this function runs. You will get to know more about it, I would say, again when we jump into code, so it's fine if you're not getting everything as of now. Okay, so now let's look at what are constructors. So constructor are special methods that create instances of a class. So the way we looked here, like drive here is known as methods, not functions, because in object oriented programming, the functions that are defined inside classes, we call them methods. So similarly, constructor are special type of methods that create instances of a class. What do I mean? Look at here. Okay, so here I have defined my car, and whenever I define this car, it calls a special method which is known as constructor. The constructor always has the name similar to that of the class. Okay, so here I have given an input as well, vroom. Here it is asking for that input, so I have defined in string here sound, and whenever I have declared an instance here car, and this car has an input vroom, and this vroom will get passed to as the sound for this class. Okay, so whenever I call this method myCar.drive, it will print sound. And what is the value of sound? Vroom. So it will display an output vroom. Okay, so I want you guys to actually code all of this on an online compiler. We'll do it in the next part of the video. The second part. Then you will get a lot more clarity. Now let's look at collections. Okay, so until now we have looked at how to store variables inside, how to store data inside a single variable. But there might be a lot of time where you want to store data in a form of an array or a bunch of variables. So let's just say here you have stored variable 1, here you have stored variable 2, 3, 4, 5, and all of these variables have a type, let's say int. So the best part about there are two types of lists. Okay, one list is dynamic, another is static. So in static list you can only have, for example, let's just say this is a static list, because here the data type of each variable or each element in a list is int 0, 1, 2, 3, 4. But there can be another form of list as well. Okay, let's just say in this list 1 is stored, then my name, yes, say Yate is stored, then something like 1, 2, 3 string is stored, and another is 4.0 is stored. So here you can see all of them as different data types: int, yet, or so this means this has a string data type, this is also has a string data type, and this has a float
slash double data type, and we call it double here. Okay, this one, sorry, wrong spelling. I hate myself. Double. Yeah, so to store a collection of data, we use collections, and there are two form of major collections in Dart. First one is the list that I just defined here. Okay, so let's say let's consider this example. We have to store a collection of fruits. Okay, so for that we will define a list here. Look at this syntax. It has a type of string, so this means only string type of data can be stored inside this list. So for example, this has an apple, this has apple, then another element is banana, another one is cherry, and then we are using loops to actually print this. So what does this loop will do? It will look for fruit in fruits. So what does it mean? Fruits is a list here, and the fruit will get assigned to this variable. For example, first fruit will be apple, so here the value of fruit will be apple. Then the next fruit value that will get assigned here is banana, then it will print banana. And the third one will be cherry, so it will print cherry. So to access the elements inside list, you have to use loops. Okay, cool. Other is maps. So maps is a key order pair value of collection. Okay, so let's consider this example. So we have this collection color, so I want to define a different color. Let's say I want to define F00 to red, a hex code, and then 0F0 to green, and then 00F to blue. These are my colors that I have defined. So to define them, I have to use this syntax. What this syntax basically means is there is a map value, this is key inside a map, and this is value known as value inside a map. Okay, value key. So this is actually a key value pair. Here the key is red and its value is F00. Here the key is green, its value is 0F0, and here the key is blue and its value is 00F, hashtag nahi, hash 00F. And then we will look out for string color in color dot keys. So what does this means is in the colors map, look for iterate for keys. So the variable color every time will get assigned to keys inside colors map. So here I am printing colors. So what does it means is I am printing colors, and the first color will be red. So the value inside colors map whose key is red, its value is F00. So it will print me F00. And the second part, it will print green. I'm accessing green key, so it will print 0F0. And then I'm accessing the blue key here, so it will print 00F. Okay, so that's how maps work. Cool. And then now let's look at error handling. So error handling is very important concept in Dart and in essential building a mobile app, because when you are, let's say, fetching data from the internet, there can be multiple errors that can occur. Something like, you know, the internet shut off, or server stopped working, or when the internet is too slow. In those cases, we need to define some errors that we need to show the user or handle them on our own. So that's why we use error handling. Okay, so it is very, very important concept. Let's go. So to manage errors inside Dart, we use a block which is known as try catch block. This is used to handle exceptions in a program. So let's take this example. Okay, so this is a syntax for try catch block. So first you need to define try
in try there are going to be bunch of statements, just like here these are statements, and then there's going to be a catch which runs in case any exception occur, exception or error, you can call whatever you want to. So let's say I'm defining a variable here result, and the value of result must be 10 0. So when you divide 10 by 0, this basically means give me an integer value when you divide 10 by 0. It is not defined in mathematics, okay? So it will give me an error. An error occurred along with the exception. So I want you guys to go and check what kind of exception actually occurred. So let me tell you, this is actually a math error. So something like mathematic error occurred or something like that will happen. So this is very important in order to handle some edge cases and build a production ready mobile app. Now let's look at another example. So let's say I have defined an age here -2. So age cannot be negative. I hope it cannot be negative in near future. So if your age is less than 0, then I have defined my own error, argument error, where I am saying age cannot be 0. So you can define your own error as well, okay? So yeah, that's how you basically catch errors in Dart, either using try catch block or throwing errors, or you can essentially people use a combination of both, okay? Awesome. So it was amazing. Now let's jump to code, the best part, okay? So I'm super excited. Let's go. I hope you understood most of the things. It's fine if you don't. When we just now start implementing the code, you will get a gist of everything, like what is object-oriented programming and stuff. So let's go. Okay guys, finally the fun part. Now let's start coding whatever we have learned till now, okay? So here I have compiled some questions for each concept that we have studied till now. So the idea is to basically get hold of the language so that we have an idea how to use if-else statement, how to use for loops, how to write basic syntax, how to declare variables. So the idea is to not get into like, DSA sort of stuff, 5-star coder. The idea is to get the gist and build our fundamentals, and once we have good beginner knowledge, good beginner fundamental knowledge of Dart, we are good to go with building mobile apps. And whatever advanced stuff needed like asynchronous programming and stuff, we can learn it anytime when we are building the mobile app. So the idea is for this code is to learn the basics which are actually required for us to build apps. Cool. So we gonna do our coding on online compiler. So I just want you guys to search for Dartpad on Google and just open this Dartpad. This Dartpad is actually an online compiler that is provided by the Dart team itself. So we don't need to install Dart SDK as of now. We'll install Flutter SDK directly. Okay, cool. So now let's jump to the first question. And the first question is, declare a variable to hold your favorite number and another to hold your favorite color and print these to the console. So now let's divide it question one by one. Question is to declare a variable. Okay, this is our task. हमको एक variable declare करना है and this variable need to hold your favorite number. सो एसेंशियली हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेरिएबल का डेटा टाइप हमको क्या डिक्लेयर करना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल हमको अपना फेवरेट नंबर स्टोर करना है. तो तुम लोगों को फेवरेट नंबर हो सकता है 7, मेरा 10 है, लेट्स से किसी का 28 हो सकता है. तो एसेंशियली ये डेटा टाइप क्या है. फॉर एग्जांपल वी जस्ट स्टडीड दिस डेटा टाइप्स. ओके, इंट, डबल, स्ट्रिंग, बूल. तो हमारा फेवरेट नंबर डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे. And okay, if you guys got it already, it's cool. So हम डेटा टाइप इसके अंदर मोस्टली इंट यूज़ करेंगे. मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी का फेवरेट नंबर 7.7 या 7.6 होगा. अगर है तो फिर डबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बट मोस्टली विल डिक्लेयर इंट फॉर दिस. ओके, सो दैट वाज एक्चुअली द क्वेश्चन हियर. ओके,
So let's try to code it. Okay, so the question is to define a variable that holds your favorite number. So इसके आइडियली दो वेज हैं, जस्ट मैं तुम लोगों को बताया था. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग टाइपिंग. ओके, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग इज लाइक मैं खुद से डिफाइन करो इंट फेवरेट नंबर इज इक्वल टू 10. ओके, एक अनदर वे है इसका, फॉर एग्जांपल वेयर. अब हम सेम नाम नहीं दे सकते हैं दो कीवर्ड्स को, तो उसके लिए हम इसको बोलेंगे माई नंबर. ओके, इक्वल टू 10. अभी दोनों के दोनों ही एक्चुअल में करेक्ट वेज हैं डिफाइन करने के लिए कोई भी डेटा टाइप. इस केस में माई नंबर को खुद से पहचान लेगा कि 10 मतलब इंटीजर, तो एसेंशियली ये वाला जो वेरिएबल है दिस इज इंटीजर. एंड इस केस में हमने ऑलरेडी 10 डिफाइन किया है, तो इस केस में क्या फ़ायदा होता है, दैट इज़ हमने स्टैटिकली टाइप कर दिया कि इसकी वैल्यू इंट होने वाली है. तो अगर मैं यहाँ पे 10.0 कर दूँ तो मेरे को कंपाइल टाइम में यहाँ पे एरर आने लग जाएगा कि अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट. सो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एंड मोर ऑफन द करेक्ट वे टू डिफाइन एनी सॉर्ट ऑफ वेरिएबल इज टू यूज keywords rather than dynamically assigning. Okay, so we will turn it again into 10. So हमारा फेवरेट नंबर हमने असाइन कर चुका है. नाउ लेट्स लुक एट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एंड डिक्लेयर अनदर वेरिएबल टू होल्ड योर फेवरेट कलर. ओके, सो तुम्हारा फेवरेट कलर रेड हो सकता है, येलो, पिंक, वॉट एवर. सो एसेंशियली हमको यहाँ पे फिगर आउट करना है कि रेड येलो ये है क्या, whether it is an integer or a double or a string or a bool. So if you can't figure out, again you have this dynamic sort of thing in programming. So I can just write where or my color and this is equal to red. So ये automatically खुद से पहचान लेगा that my color का जो data type है that is red. But again एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि हम इसको खुद से डिफाइन करें स्ट्रिंग, कि मेरे को एक कलर डिफाइन करना है, लेट्स से कलर, एंड उसको मैं वैल्यू दूंगा ब्लू. ओके, ये भी नंबर चेंज कर देता कि डिफ्रेंशिएशन हो पाए. तो हमने इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू ये हमने दो चीज़ें सीखी. सबसे पहले कि हम जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट्स डेटा टाइप. And if you don't want to think about its data type and जो assign हो जाए, then we can use variable, but it is actually not a good practice to go along with. Okay, cool. अब हमको बस ये print करना है, ठीक है. तो print favorite number, then my number, my color and color. ओके, एंड अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा प्रोग्राम चल चुका है. यहाँ पे ये फेवरेट नंबर 10 और माई नंबर 11, माई कलर रेड एंड कलर ब्लू. सो आई गेस वी आर गुड विथ क्वेश्चन नंबर 1. हमारा हो चुका है. कूल. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. यूज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट. ओके, सो एसेंशियली हमको दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे. तो मैंने बताया था वाइल टीचिंग यू ऑपरेटर्स कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कौन सा होता है. तो मोस्ट ऑफ तुम लोगों को याद होगा दिस स्टार ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग इज़ यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज हम x यूज़ नहीं कर सकते हैं, x इज़ अ वेरिएबल. ओके, सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज स्टार एज अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर. सो व्हाट आई वांट इज़ कि मैं जब भी किसी क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने वाला हूँ तो आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट इट एटलीस्ट 10 सेकेंड्स पॉजिंग द वीडियो ऑन योर ओन कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. बाकी मैं तो तुमको बताऊंगा ऑब्वियसली कैसे करना है, एंड बाद में कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा. कूल. सो हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करना है टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट. तो एसेंशियली यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के दो तीन चीज़ें हैं जो हमको समझनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो मैंने वो तुमको जस्ट अभी बता दिया. सेकंड इज़ हाउ टू यूज़ दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. फॉर दैट वी नीड टू डिफाइन two numbers. What is a number? Number can either be an integer or number can either be a double. Okay, so इस क्वेश्चन में for the sake of experimenting things I will take a double number. Okay, now let's try to code it. Okay, so let's say मैं first of all I'll define a variable x is equal to 20.
okay, or let's say 19 would be better. And here I will define another double. For the sake of this tutorial we are experimenting, so हम double लेते हैं y equal to 20.6 and इसको भी हम double ही ले लेते हैं 19.2 let's say. And now let's print x star y. And we got a result 395.520004, and it's a garbage value that's there already in the compiler, so we can't do anything about it. But let's experiment some stuff. Okay, let's say मैं एक string को string की वैल्यू 19.2 देता हूँ एंड इसको मल्टीप्लाई करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, y से. मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे एक कंपाइलेशन पॉइंट पे एरर आ गया है. द आर्ग्यूमेंट टाइप डबल कांट बी असाइन टू द पेरीमीटर टाइप इंट. सो अगेन मेरे को वो एरर आया, तो उस वजह से नहीं हो पाएगा. तो एसेंशियली हम स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट लेट्स अज्यूम दैट वेरिएबल x इज इक्वल टू 19, ठीक है. सो इस केस में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज x will be considered as a integer. Okay, we can see here as well, because हमने उसकी वैल्यू के आगे 0.0 नहीं लगाया. अगर हमने लगाया होता तो उस केस में एक डबल होता, बट हमने 19 को 19 रह दिया. अब हम x को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर टू अ डबल. तो उसकी रिजल्टिंग वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए. लेट्स सी. एंड उसकी रिजल्टिंग वैल्यू डबल होती है. सो एसेंशियली व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग एनीथिंग विद अ डबल, सो डबल का ज़्यादा वेटेज होता है. वी नीड टू ऑल्सो लाइक एक्सपेरिमेंट दिस स्टफ कि इसको ज़्यादा असेंडिंग ऑर्डर में माना जाता है. सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इंटीजर, ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर. और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. कूल. सो क्वेश्चन 2 भी हमारा हो चुका है. नाउ लेट्स स्विच टू कंट्रोल फ्लो, जिसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट एंड फॉर लूप के बारे में पढ़ा था. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ फॉर लूप. सो स्विच करते हैं हमारे कंट्रोल फ्लो पे. सो हेयर आई टॉट यू द syntax for writing a for loop. So it's very simple. First of all, you need to define here your variable. Then you to define a condition जब तक ये loop चलना चाहिए. And then यहाँ पे there must be an operator. So here is an increment operator I plus plus. And उसके अंदर तुम जो करना चाहें वो कर सकते हो. So यहाँ पे I am printing. So यहाँ पे हमसे बोला है, उसके अंदर क्या करने के लिए बोला है कि print number from 1 to 10. So essentially हमको यहाँ पे number 1 to 10 print करने हैं. Cool. I think it's not that difficult. Let's begin to do it. Again, I would recommend you guys to, first think about it yourself at least for 10 seconds before me writing it. And anyways, मैं तो बता ही रहा हूँ. Okay. So we need to run a for loop. तो for loop का हमने syntax अभी क्या पढ़ा था? सबसे पहले we write for, then we define a bracket, and उसके बाद we define a variable. Let's just say variable I is equal to 0. Then we need to define a condition. इस केस में we need to print numbers from 1 to 10. So हम इसकी वैल्यू 0 के बजाय 1 करेंगे, बिकॉज हमें 1 से प्रिंट करना है. एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू हम करेंगे लेसर देन और इक्वल टू 10. सो एसेंशियली आई की वैल्यू जब तक 10 से छोटी है या उसकी इक्वल है तो वी आर गुड टू गो. एंड आई प्लस प्लस कि हर बार आई की वैल्यू प्लस कर दो. तो एसेंशियली प्रिंट नंबर प्लस, दिस इज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर. इसमें तुमको अभी पता लगेगा कि कैसे काम करता है. आई अब यहाँ पे हमने एक एरर देखी दैट इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस. द आर्ग्यूमेंट टाइप इंट कान बी असाइन टू द पेरीमीटर टाइप स्ट्रिंग. सो एसेंशियली वी लर्न हियर कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की चीज़ों को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते. सो फॉर एग्जाम्पल, for to concatenate them, there is another method that is defined by Dart itself. So उसके लिए हम यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ करते हैं और उसके बाद आई लिख देंगे. ओके. सो एसेंशियली इससे समझ जाएगा कि इसके अंदर ये आई जो है ये एक वेरिएबल है रादर देन एक स्ट्रिंग और स्टैटिक स्ट्रिंग. अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है. कूल. ये प्रिंट हो गया.
So number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, blah 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 blah, and everything. So here we have printed everything from 1 to 10. So our question is over. I again want you guys to experiment other sort of stuff. For example, let's say I की वैल्यू 1 है और मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूँ, तो एसेंशियली 1 के बाद इसकी नेक्स्ट वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 के बाद 3 हो जाएगी, 3 के बाद 4 हो जाएगी, तो कभी इसकी वैल्यू 0 से नीचे आ ही नहीं सकती. तो इस केस को हम बोलते हैं इन्फिनाइट लूप. लेट्स ट्राई टू रन इट. ओके, एंड ये रन हो रहा है. यहाँ पे तो ये कुछ दिखा नहीं रहा, बट एसेंशियली ये मेमोरी लीकेज हो जाती है, तो ये रन नहीं हो सकता बिकॉज ये एक इन्फिनाइट लूप चल चुका है. सो जस्ट एक्सपेरिमेंट अदर स्टफ. फॉर एग्जाम्पल आगे नो दिस इज समथिंग एल्स. सो अगर हम यहाँ पे आई माइनस माइनस कर दें, तो अभी 1 है आई की वैल्यू, और अगर मैं माइनस माइनस कर दूँ तो अगेन ये इन्फिनाइट लूप चल चुका है, क्योंकि 1 की वैल्यू 0, ये लूप कभी चलेगा ही नहीं क्योंकि 1 0 से छोटा नहीं है, राइट. 1 इज नॉट लेसर देन इक्वल टू 0. बट इसी जगह पर अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूँ, तो ये 1 को प्रिंट करे, 0 को प्रिंट करे, क्योंकि जैसे -1 हुआ तो -1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो एसेंशियली ये सब तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर. ओके, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोर आइडिया. सो एसेंशियली हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस एन इफ एल्स स्टेटमेंट टू कंपेयर टू नंबर्स एंड प्रिंट विच वन इज लार्जर. तो ये हल्का सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है एंड वी मस्ट ब्रेक इट डाउन इनटू मिनिमम एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स. किसी भी क्वेश्चन को करना है तो सिंपली मिनिमम एग्जीक्यूटेबल प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स में ब्रेक इट डाउन करो. तो सबसे पहले हमको एक प्रोग्राम लिखना है, मेक सो मच सेंस, दैट यूजेस एन इफ एल्स स्टेटमेंट. थैंक यू, उन्होंने पहले ही बता दिया कि इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है. टू कंपेयर टू नंबर्स एंड प्रिंट विच वन इज लार्जर. ठीक है, तो एसेंशियली सबसे पहले हम सिंटेक्स देखते हैं. किसी भी इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हम इफ़ के अंदर एक कंडीशन डिफाइन करते हैं, एंड ये कंडीशन हमें एक आउटपुट देता है ट्रू या फॉल्स, एंड उसके बेसिस पे या तो इफ़ ट्रू तो ये वाला स्टेटमेंट होता है, एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स देन एल्स वाला स्टेटमेंट होता है. तो ये बहुत बेसिक सा सिंटेक्स इसका. सो करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन अ नंबर int x is equal to 20 and now int y is equal to 30. Okay, and then let's print if x is greater than y. I want to print x is greater, else I want to print y is greater. शायद हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है. स्टेटमेंट टू रन्स एंड प्रिंट विच वन इज लार्जर. तो हमें एसेंशियली उसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है जो लार्जर है, तो हम इसको $साइन लगा देंगे ताकि वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर दे डायरेक्टली. मेक सेंस. ओके, एल्स का स्टेटमेंट गलत है. या कूल. ये यहाँ पे बोले स्टेटमेंट शुड बी इन एनक्लोज ब्लॉक. सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हमेशा हमारे कोड को हम एक ब्लॉक के अंदर रखें. तो यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट वाला ब्लॉक डिफाइन किया एंड उसके अंदर रख दिया, एंड अब इसको चला के देखते हैं. सो एसेंशियली 30 इज ग्रेटर, ऑब्वियसली, मेक सो मच सेंस. अब इसी जगह पे अगर मैं इसको डिफरेंट डेटा टाइप से निकल ट्राई करूँ, सो लेट्स एज्यूम कि हम इसको इंटीजर की बजाय डबल से कंपेयर करते हैं. तो 20.5 से कंपेयर करके देखते हैं कि ये हो भी पाता है या नहीं कंपेयर, या कुछ एरर देता है. लेट्स सी. एंड इसको हम देख सकते हैं, अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट. सॉरी, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये कर रखा है. ओके, सो अब इसको चला के देखते हैं क्या होता है. सो 20.5 इज ग्रेटर. सो एसेंशियली हम डबल को और इंटीजर को इजीली कंपेयर कर सकते हैं. ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हों तो हमको कोई दिक्कत नहीं है. सो या एसेंशियली ये वाला क्वेश्चन भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है. इसके साथ तुम बाकी कुछ करना चाहो एक्सपेरिमेंटेशन तो कर सकते हो, योर चॉइस. कूल. सो दिस वन इज़ ऑल्सो कंप्लीट. सो हमने इफ एल्स यहाँ पे सीख लिया, इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, एंड वी ऑल्सो लर्न हियर फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं. सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ एक्चुअली यूजिंग फंक्शन. सो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं क्या होता है. अगेन हमने पढ़ा था फंक्शन आर ब्लॉक ऑफ कोड. एक इसको मशीन की तरह हमने देखा था कि इसके अंदर हम इनपुट देते हैं एंड इस मशीन के अंदर कुछ चंक ऑफ कोड लिखा रहता है, वो हमको एक
आउटपुट देते हैं, जो भी हम प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। राइट अ फंक्शन ओके दैट टेक्स अ नेम एज एन आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंट्स अ ग्रीटिंग। सो एसेंशियली हमको क्या करना है कि हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है एंड उस फंक्शन को एक इनपुट लेना है एज अ फॉर्म ऑफ नेम। तो किसी का नेम क्या होता है, नंबर तो होता नहीं है, स्ट्रिंग होता है। तो हमको एक स्ट्रिंग एक एज एन आर्ग्यूमेंट लेना है एंड हमको प्रिंट करना है हेलो यतेंद्र या हेलो अक्षय या हेलो जो भी, हेलो पूजा। कूल। सो हेयर लेट्स डिफाइन अ फंक्शन। तो फंक्शन हमेशा हम void मेन के बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है, कॉल करने के लिए। सो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन एंड लेट्स से void ग्रीटिंग्स एंड ये इसके अंदर एक वैल्यू ले रहा है स्ट्रिंग एंड इसका हम वेरिएबल का नाम रखते हैं नेम एंड ये यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ग्रीटिंग्स नेम। एंड इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम हमेशा मेन के अंदर चलाएंगे। तो मेन हमारा सबसे मोस्ट असेंडेड फंक्शन होता है जो सबसे पहले चलता है। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, void greetings void main। सो कंपाइलर को कैसे पता होगा कि कौन सा फंक्शन कैसे पहले चलना है? तो दिस इज अ एक्सियम इन प्रोग्रामिंग कि मेन फंक्शन सबसे पहले चलता है। तो हम यहाँ पे ग्रीटिंग्स डिफाइन कर देंगे, ग्रीटिंग्स एंड मैं लेट्स से अपना नाम ले देता हूँ यतेंद्र एंड लेट्स सी क्या होता है। ओके कूल। सो ग्रीटिंग्स यतेंद्र। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी क्वेश्चन था राइट अ फंक्शन, ठीक है, हमने फंक्शन लिख दिया दैट टेक्स नेम एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं स्ट्रिंग नेम, ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं एंड प्रिंट्स अ ग्रीटिंग। तो हम यहाँ पे ग्रीटिंग भी करेंगे, ग्रीटिंग्स यतेंद्र। आई डोंट लाइक कैपिटल लेटर्स। ओके तो ग्रीटिंग्स यतेंद्र, ग्रीटिंग्स टू मी। सो दिस वन क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो एसेंशियली इसने एक प्रोसेसर की तरह काम किया, एक मशीन की तरह जिसने एक इनपुट ले लिया और हमको एक आउटपुट दे दिया डिजायर्ड जो हमको चाहिए था। नाउ लेट्स लुक एट अनदर फंक्शनल क्वेश्चन। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स टू नंबर्स एंड रिटर्न्स देयर प्रोडक्ट। अब इसमें तुमको कुछ नई चीज़ें भी सिखाऊंगा। ओके तो सबसे पहले हम एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं दो नंबर का। हमको यहाँ पे दो नंबर्स लेने हैं, तो एसेंशियली दो इंटीजर्स लेते हैं लेट्स से। सो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन void मल्टीप्लिकेशन। ओके मल्टीप्लिकेशन एंड इसके अंदर हम दो डिफाइन करते हैं इंट x एंड इंट y एंड हम रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे इसने बोला है कि उसको रिटर्न भी करना है, तो void फंक्शन ये नहीं हो सकता, हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि रिटर्न टाइप क्या है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे x मल्टीप्लाइड बाय y। सो बेसिकली इस फंक्शन का मीनिंग क्या है कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इसके अंदर हमें दो आर्ग्यूमेंट देने होंगे, दो नंबर्स देने होंगे x एंड y एंड जो भी वो दो नंबर होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ट्राई करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन 10, 20। ओके अब वन मोर थिंग, ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन void नहीं है, ये हमको एक आउटपुट एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमको इस वैल्यू को जो रिटर्न हो रही है इसको हमको यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा उसको। तो लेट्स से इंट वैल्यू या वेल ऑलरेडी एक कीवर्ड हो सकता है, तो उसकी वजह हम लिखते हैं लेट्स से रिटर्न वैल्यू एंड इसको हम डिफाइन कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एसेंशियली ये रिटर्न वैल्यू जो है यहाँ पे हमने एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं एंड ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन हमको एक वैल्यू रिटर्न करता है जो रिटर्न वैल्यू को मिल जाती है एंड आप उसको डिफाइन करने का प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। आई हेट दिस नेम, लेट्स कॉल इट नम। ओके नॉट नम, लेट्स कॉल इट जेड। ओके सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ भेजी एंड उसका हमको एक आउटपुट मिल गया 200 जो हमने पहले z में स्टोर किया एंड इस वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। अब डार्ट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये नल सेफ होता है एंड इसके अंदर हम और अच्छी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं या दे सकते हैं।
तो रादर देन जस्ट सेइंग इधर हमको पता नहीं है कि 10 हम किसको दे रहे हैं, एक्स को दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं, तो एसेंशियली हमको 10 और 20 इस ऑर्डर में देना पड़ेगा कि एक्स यहाँ पे 10 को ही मिलेगा, 20 यहाँ पे वाई को ही मिलेगा. बट अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जिसके में से बट अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे. अब ब्रैकेट के अंदर हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, रिक्वायर्ड इंट एक्स कॉमा रिक्वायर्ड इंट वाई, एंड लेट्स सी. अब इसका मीनिंग क्या है कि अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 10 या 20 को हमको केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैल्यू किसको जा रही है किसकी नहीं. अब यहाँ पे हम जैसे y को ऐसे लिख सकते हैं एंड x को ये लिख सकते हैं. सो एसेंशियली इसका मतलब है कि y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 20 है. अब हमको ये ज़रूरी नहीं कि रेस्पेक्टिवली ही लिखें हम वहाँ पे. तो दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस वे टू डिफाइन आर्ग्यूमेंट्स, एंड इसी तरीके से हम हर जगह पर आर्ग्यूमेंट्स अपने डिफाइन करने वाले हैं. पिछला वाला मेथड इज़ नॉट गुड टू एक्चुअली डिफाइन आर्ग्यूमेंट्स, सो दैट्स वाई ये भी बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. ओके कूल. सो इसके थ्रू हमने काफ़ी चीज़ें सीखी कि हम दो इंटीजर्स को कैसे आर्ग्यूमेंट देते हैं, एंड क्या सही तरीका होता है आर्ग्यूमेंट देने का. एंड हमको एक वैल्यू को रिटर्न करना है तो उसका हमें एक यहाँ पे रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, एंड जो भी वैल्यू हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं उसको हमें कैच करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन करना पड़ता है वेरिएबल. सो काफ़ी सीखने को मिला हमको यहाँ पे भी. अब हम क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. सो एसेंशियली क्वेश्चन 1 इज क्रिएट अ क्लास फॉर अ पर्सन विथ प्रॉपर्टीज फॉर नेम एंड एज. By the way, most of the people find object-oriented programming a little tricky or hard, I would say. So it's fine अगर फर्स्ट टाइम में तुमको सब कुछ समझ में नहीं आता, इट्स टोटली फाइन. 3-4 बार करेंगे, बहुत बार करेंगे, बहुत ही बार करने वाले हैं, तो इट्स फाइन, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक समय के बाद. तो क्रिएट अ क्लास फॉर अ पर्सन विथ प्रॉपर्टीज फॉर नेम एंड एज. Instantiate a person object and print its properties. Again, a little complex question, so we need to divide it into further parts. So first of all, we need to create a class for a person. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं, class person. Okay. So हमारे ये वाला part of question हो चुका over. The next part is with properties for name and age. ओके तो हमको उसकी दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है, नेम एंड एज. तो नेम के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज़ होना चाहिए तुम लोग बताओ मेरे को. ऑब्वियसली स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग नेम. एंड एज के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज़ होना चाहिए, स्ट्रिंग, राइट. नहीं, इंट. एज इंट में होती है. आई वॉज टेस्टिंग यू. एनीवेज, एंड इसके बाद हमको एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होता है टू इनिशियलाइज देयर वैल्यूज़. अदरवाइज उसको समझ में नहीं आता है. मतलब मैं तुमको बताया था ना कि डार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो दिस इज़ वेयर इट कम्स इन टू प्ले, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. इसके वजह से हमको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं कोर्स के अंदर. कोर्स के अंदर बोल रहा हूँ, कोड करते वक्त. ओके, एंड तो हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया. उसकी प्रॉपर्टीज हमने दो डिफाइन कर दी, नेम एंड एज. इंस्टेंशिएट अ पर्सन ऑब्जेक्ट एंड प्रिंट इट्स प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करने के सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं, इंस्टेंशिएट अ पर्सन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो पर्सन दिस इज एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पर्सन, एंड उसके अंदर हम वैल्यूज़ भेज रहे हैं, यतेंद्र कॉमा माई एज इज 22. एंड अब हमने ये वाला पार्ट भी कर दिया, इंस्टेंशिएट अ पर्सन ऑब्जेक्ट, एंड अब हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है. तो लेट्स से वॉइड प्रिंट. ओके, एंड हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ प्रिंट कर देंगे. प्रिंट प्रॉपर्टी नहीं, प्रिंट नेम, एंड लेट्स जस्ट से नेम and age, let's say age. अब हमको कुछ एरर्स दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं, तुमको दिख रहे हैं या नहीं. So too many positional arguments, 0 expected but 1 found. The value of the local
वेरिएबल पर्सन इजंट यूज, सो इट्स अ वार्निंग नॉट एन एरर। तो ये वार्निंग तो हम इजीली हटा सकते हैं यहाँ पे पर्सन डॉट प्रिंट कर। तो हमने पर्सन को यूज़ कर लिया। ओके, सो यहाँ पे हमको एरर आ रही है टू मेनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, जीरो एक्सपेक्टेड वन फाउंड। सो इसमें एक्चुअल में एरर ये है कि हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है, एंड प्रिंट इज़ ऑलरेडी अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन डार्ट। सो इसका ऑलरेडी एक रोल होता है, तो हम उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं, खुद से यूज़र डिफाइंड मेथड क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमको उसका नेम चेंज करना पड़ेगा, लेट्स नेम इट डिस्प्ले इन्फो, एंड सिमिलरली फिर हमको उसको भी कॉल करना पड़ेगा सेम नाम से। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, एंड here we can see name Yatendra and age 22. So essentially ये हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन ओवर है। तो मेरे को यहाँ पे ये फिगर आउट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, मेरे को भी हिट एंड ट्रायल करना पड़ गया था बहुत सारा, मेरे को दिख नहीं रहा था कि प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया है। तो अगेन ये प्रोग्रामिंग में इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। ये 10 ईयर्स जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके साथ भी हो सकता है, जिसके पास 2 ईयर्स है वो भी हो सकता है, एंड जिसके पास 2 डेज है वो भी, तो इट्स टोटली फाइन। सो एसेंशियली हमने सारी आई थिंक चीज़ें कवर कर दी हैं। इंस्टेंशिएट से पर्सन ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया, देन प्रिंटेड प्रॉपर्टीज़, तो हमने प्रॉपर्टीज़ भी प्रिंट कर दी। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया। कूल। एड अ मेथड टू द पर्सन क्लास दैट प्रिंट्स हेलो माय नेम इज़ ये एंड आई एम दिस मच ईयर ओल्ड। तो ये मैंने ऑलरेडी खुद से कर दिया, तो यहाँ पे मैं नेम और एज खुद से प्रिंट कर रहा हूँ। तो टू प्रिंट दिस एग्जैक्ट सिमिलर कमांड सिमिलर आउटपुट, तो मैं बस यहाँ पे इसको वो कर सकता हूँ कॉपी पेस्ट, एंड इसको यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगा दूंगा सो दैट उसको पता लग पाए कि एक इंटीजर वो वेरिएबल है। एंड सिमिलरली यहाँ पर एंड माय नेम इज जितेन एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। सो हमारे दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कर लिया। कूल, नाइस प्रोग्रेस, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हमारे यहाँ पे कलेक्शंस के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। सबसे पहले कलेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट फ्रूट्स एंड प्रिंट द लिस्ट। सीम्स इजी टू मी एटलीस्ट। अब देखते हैं इसको कैसे करना है हमको। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत चीज़ें होती हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड बहुत सारी चीज़ें, बट वो मैंने तुमको अभी नहीं बताई हैं बिकॉज उसको अभी बताने का कोई सेंस मेक नहीं करता। वो हम अब प्रोग्रामिंग के साथ सीखेंगे तो इट वुड मेक अ लॉट मोर सेंस, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को फिर से उठाते हैं। क्रिएट अ लिस्ट। सो अगेन हमें यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी है 5 डिफरेंट फ्रूट्स। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर होते हैं या लेटर्स होते हैं। फ्रूट्स बेसिकली मैंगो इज अ string, that's what the keyword I'm looking for. So mango and stuff. So basically हमको 5 स्ट्रिंग डाल दी है एक लिस्ट के अंदर, तो उसको हम डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पे सिंटेक्स सीखा था हेयर लिस्ट, एंड उसके अंदर हमें जो भी वैल्यू डिफाइन करनी है वो स्ट्रिंग, एंड उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से लिस्ट स्ट्रिंग एंड फ्रूट्स, एंड कोई भी 5 फ्रूट के नाम लेते हैं। लेट्स सी मुझे आते हैं यानी गुआवा, एप्पल, बनाना, नहीं आते मेरे को 5 फ्रूट्स के नाम, पपाया एंड कीवी आते हैं, थैंक गॉड। सो एसेंशियली हमने 5 फ्रूट्स के यहाँ पे नाम डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछे नेक्स्ट पार्ट, एंड प्रिंट द लिस्ट। हमको बस ये लिस्ट को प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना। तो प्रिंट करने के 2 तरीके, या तो हम लूप कर सकते हैं इसके अंदर, और या तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो हम दोनों चीज़ें करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिए फ्रूट्स। तो अब क्या होगा कि ये फ्रूट्स वाली लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इनको अलग अलग तरीके से प्रिंट करूँ लूप के अंदर। तो हम अगेन लूप यूज़ करेंगे विच इज़ फॉर। अब मैं इसके अंदर भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंट आई इक्वल टू 0 एंड इंट आई लेसर देन फ्रूट्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, एंड अब इसके अंदर में प्रिंट फ्रूट्स। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारा कोड लिख दिया। यहाँ पे चल क्या रहा है तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 100%, नहीं आ रहा तो प्लीज़ लेके आओ, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे तो ऊपर सब कुछ एक साथ आ रहा है, यहाँ पे एक एक करके गुआवा, एप्पल, बनाना, पपाया एंड कीवी। तो एसेंशियली यहाँ पे मैंने अगेन आई की वैल्यू 0 डिक्लेयर की है, एंड लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्सिंग होती है। तो अगर हमें
ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है गुआवा, तो ये फर्स्ट नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता, फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं, दिस एग्जिस्ट एट 0th इंडेक्स. So for example, when the value of fruits and I'm accessing the 0th index, so I'm essentially accessing guava. And when the value of I is 1, then I'm accessing apple. When the value of I is 2, I'm accessing banana, then papaya, then kiwi. So fruits का length क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. So essentially I कब तक चलेगा? जब तक वो 5 से छोटा है. तो जैसे इसकी वैल्यू 5 होगी तो ये लूप के बाहर आ जाएगा. तो दैट्स वाई हमको फिफ्थ वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है. अगेन एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटेशन, इवन तुम चाहो तो और भी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो इसके साथ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ, अब इसके अंदर का जो एलिमेंट है मैं इसको भी एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर कर सकता हूँ. तो लेट्स जस्ट से इफ फ्रूट्स आई एंड 0 इक्वल टू जी, देन प्रिंट गुआवा. ओके, एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 बार गुआवा प्रिंट हो गया. इसी जगह पे अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे पहला एलिमेंट अगर ए है तो फिर भी गुआवा प्रिंट हो गया. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने गुआवा लिखा हुआ है. ओके, तो एप्पल प्रिंट हो गया. सो एसेंशियली ऐसे तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. कूल. सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया. कॉन्गो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ मैप दैट एसोसिएट अ कलर विद इट्स हेक्साडेसिमल वैल्यू, जो हमने उसमें देखा था अभी जस्ट जो हम पढ़ रहे थे, एंड प्रिंट द मैप. सो एसेंशियली आई थिंक सेम क्वेश्चन ही है. मैंने सेम क्वेश्चन क्यों लिया? एनीवेज कोई नहीं, ट्राई करते हैं. सो हमको एक मैप को डिफाइन करने के लिए एक की चाहिए होती है, एक वैल्यू चाहिए होती है. तो दिस टाइम लेट्स टेक लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. हम की लेंगे स्ट्रिंग एंड लेट्स से हम वैल्यू लेंगे लिस्ट. ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए, सो दैट और ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लियर हो हमारे एंड हम डरे नहीं किसी भी चीज़ से. तो लेट्स डिफाइन, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द क्वेश्चन अगेन. क्रिएट अ मैप. ठीक है, मैं सबसे पहले मैप को क्रिएट करता हूँ एक. तो मैप, एंड मैप का मैं की लेना चाहता हूँ स्ट्रिंग, एंड उसकी वैल्यू लेना चाहता हूँ अगेन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. ओके, नाइस complexity. So let's say I name it colors map. Okay, and that associate a color with its hexadecimal value. तो बेसिकली यहाँ पे हमारा की होगा कलर एंड उसके साथ होगी उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू, एंड प्रिंट द मैप. तो यहाँ पे मैं इवन स्ट्रिंग की बजाय इंटीजर ले लेता हूँ. ठीक है, वो इंट ले लेता हूँ. तो लेट्स जस्ट से 1 नंबर पे हमारे पास है रेड कलर एंड उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है 0FF. आई डोंट नो गाइस रेड की क्या होती है, आई एम सो सॉरी. एंड लेट्स से एक है ब्लू कलर एंड इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है #0FD. ओके, आई थिंक दैट्स एनफ. हम 2 वैल्यूज़ को ले सकते हैं. अब हमको क्या करना है, एंड प्रिंट द मैप. अब यहाँ तो हम डायरेक्टली मैप प्रिंट कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट मैप. एंड दूसरा तरीका जो कि और ज़्यादा बेटर तरीका होता है, इटरेट करना उसके अंदर. सो लेट्स, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हम अगर इटरेट करना है तो हम एक फॉर लूप चलाते हैं. उसमें अगेन हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एंड वो वेरिएबल जो होता है वो इटरेट करता है जो कीज़ हैं उसके थ्रू. वैल्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, इट्स फाइन, बट हम कीज़ के थ्रू करते हैं बिकॉज की रिफ्लेक्ट करती है जो उसके अंदर की वैल्यू है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू यूज़ इट. ओके, सो लेट्स से मैं एक इंट डिक्लेयर करता हूँ बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा की इंट है आई इन कलर्स मैप डॉट कीज. ओके, एंड इसके अंदर हम प्रिंट करते जाएंगे जो भी हमारी वैल्यू है कलर्स मैप की. ठीक है, कलर्स मैप आई. तो जैसे मैं कलर्स मैप 1 को एक्सेस करूँगा तो ये प्रिंट होगा. जैसे मैं कलर्स मैप 2 को एक्सेस करूँगा तो ये प्रिंट होगा. एंड लेट्स सी होता है या नहीं. यप, इट्स गेटिंग प्रिंटेड. तो सबसे पहले हमारा कलर्स मैप प्रिंट हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं. एंड देन उसके बाद एक एक करके हमारा सबसे पहले ये वाला वैल्यू प्रिंट हुआ,
एंड देन उसके बाद हमारा ये वाला वैल्यू प्रिंट हुआ. अगेन इसके साथ भी तुम बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, योर चॉइस, एंड आई लीव इट ऑन यू. ओके, कूल. सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, थैंक गॉड. नाउ द लास्ट मोस्ट पार्ट, error handling. Write a program that tries to convert a string to a number and catches any errors and prints an error message. So ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है. तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. तो राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, हम प्रोग्राम करने वाले हैं. दैट ट्राइज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ नंबर. तो हम एक स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. कूल. एंड कैचेस एनी एरर्स प्रिंटिंग एन एरर मैसेज. ठीक है, अब इसको हम कोड करते हैं. ओके, तो इसको अब हम कोड करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं. राइट अ प्रोग्राम दैट ट्राइज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ नंबर एंड कैचेस एनी एरर्स, एंड उस एरर को प्रिंट करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करने का ट्राई करते हैं. सो लेट्स से वेरिएबल स्ट्रिंग नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 ABC. सो एसेंशियली ये हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है जो कि एक्चुअल में एक नंबर है. अकॉर्डिंग टू दैट, सॉरी ये मैंने गलत वाला यूज़ किया है. अकॉर्डिंग टू दैट, एंड लेट्स सी ये नंबर है या नहीं. तो अब हम यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे. हमने इसकी सिंटेक्स देखी थी यहाँ पर. सबसे पहले हम ट्राई लिखते हैं, ट्राई के बाद जो भी हमें अंदर लिखना है हम वो लिखते हैं, एंड उसके बाद हम कैच के थ्रू कोई भी अगर एरर आती है तो यहाँ पे कैच करते हैं. तो सबसे पहले ट्राई किया, उसके बाद हम कैच करेंगे अगर कोई भी एक्सेप्शन थ्रू होगी, एंड अगर कोई भी एक्सेप्शन है तो हम उसको डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे. ठीक है, लेट्स सी. सो वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू, अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में क्रिएट करना होता है और स्ट्रिंग को इंट में क्रिएट करना होता है तो हम उसके लिए एक फंक्शन यूज़ करते हैं, इंट डॉट पार्स, एंड उसके अंदर हम जो भी स्ट्रिंग है उसको डाल देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक एरर दिख रही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियस है. यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगा रखा है. अब इसके बाद हम इस नंबर को प्रिंट करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, लेट्स सी क्या होता है. अब एसेंशियली यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 2 3 ABC को एक इंटीजर बनाने का ट्राई करेगा, बट 1 2 3 ABC एक इंटीजर है. लेट्स सी. हो जा भाई प्रिंट. एरर फॉर्मेट एक्सेप्शन 1 2 3 ABC. सो एसेंशियली इसने हमको दिया कि एक फॉर्मेट एक्सेप्शन है. 1 2 3 ABC इज नॉट अ इंटीजर, इट्स एक्चुअली एन स्ट्रिंग टू बी ऑनेस्ट. सो हम अगर यहाँ पे इसी जगह पे 1 2 3 ABC की बजाय 1 2 3 कर दें, नाउ इट्स अ स्ट्रिंग, एंड लेट्स सी अब क्या, नाउ इट्स अ इंटीजर. लेट्स सी अब क्या आउटपुट आता है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 हमारा आउटपुट आ चुका है. So that's how you catch errors while doing programming. And ये asynchronous programming में तो और भी ज़्यादा important हो जाता है, बहुत ज़्यादा important. So ये one of those concepts हैं जो मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि प्लीज़ ढंग से ध्यान देना, बहुत ही ज़्यादा important है. बहुत इसके अराउंड हम सब कुछ कर रहे होंगे. ट्राई कैच ब्लॉक तो लिटरली हर जगह पे यूज़ होता है. तो प्लीज़ इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करो, कैसे करते हैं, क्या करते हैं एंड स्टफ. सो हमारा फर्स्ट वाला हो चुका है. सेकंड वाला क्वेश्चन हम एक इसमें कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे. तो मैंने तुमको जब पढ़ा था तब बताया था कि एक कस्टम एक्सेप्शन है कि एज जो हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो अब इसको हम बनाने का ट्राई करते हैं कि कैसे एज नेगेटिव नहीं हो सकती है. ठीक है, सो इसको कोड करते हैं. सबसे पहले इसको हटाते हैं. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर मुझे एक एक्सेप्शन क्रिएट करनी है खुद से, तो उसके लिए मुझे क्लास क्रिएट करनी पड़ती है, एंड वो क्लास डिटरमाइन करती है और या फिर डिफाइन करती है जो भी एक्सेप्शन है. तो लेट्स जस्ट से मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर एक्सेप्शन. ओके, और वो इम्प्लीमेंट करती है एक्सेप्शन. तो इम्प्लीमेंट इज बेसिकली वो एक ऑलरेडी एक क्लास है एक्सेप्शन जो डार्ट ने डिफाइन कर रखी है, एंड उसको वो इनहेरिट कर रही है ढंग से. ठीक है, सो लेट जस्ट डिफाइन अ स्ट्रिंग एरर मैसेज. सो ये क्या होता है, दिस इज एसेंशियली आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन. ठीक है, इसका मीनिंग है कि जैसे एरर मैसेज फंक्शन कॉल होगा तो वो ये वाली स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, विच इज नंबर्स कांट बी नेगेटिव. ठीक है,
सो ये रिटर्न करेगा। इसका मीनिंग ये होता है कि रादर देन मैं ये करके एंड उसके बाद रिटर्न लिखूँ, उसके वजह डायरेक्टली ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके, रिटर्न ऑपरेटर जो भी बोलते हैं इसको, एरो ऑपरेटर बोलते हैं गेस, बिग फैट एरो। सो इसको यूज़ करके मैं और डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ रादर देन वो सब डिफाइन करने के। एंड उसके बाद हम इसके अंदर एक डिफाइन करते हैं फंक्शन void check number, ठीक है। एंड इसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट देते हैं इंट num, एंड इफ num इज लेस देन 0 देन हम थ्रो करेंगे नेगेटिव नंबर एक्सेप्शन। सॉरी मैंने गलती से लगा दिया। सो एसेंशियली इसका मीनिंग ये है कि जैसे नम की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि भाई ये जो भी है ये गलत है, इसको ठीक करो, ठीक है। वरना क्या करेगा, द नंबर इज नंबर, सिंपल, ये करेगा, ठीक है। अब इसको हम ट्राई करते हैं void मेन के अंदर। सॉरी ये मेन नीचे जाएगा क्लास के, ठीक है। दिस इज हाउ सिंटैक्स वर्क आइडियली, ठीक है। अब इसके अंदर भी ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने खुद की एक्सेप्शन डिफाइन कर रखी है एंड लेट्स सी वो कैसे काम करती है, ठीक है। पेरेंट एरर ई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चेक नंबर को कॉल करता हूँ, ठीक है। नहीं, उसके पहले हमको एक डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कोई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर कर दिया है। वो ब्लेंडर ये है कि ये जो क्या कहते हैं फंक्शन है, ये मैंने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया है, विच इज़ रॉन्ग। क्लास सिर्फ और सिर्फ यूज़ होती है एक्सेप्शन को डिफाइन करने के लिए, तो हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे एंड एक यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें डिफाइन की हैं, एक क्लास जो कि एक्सेप्शन, नेगेटिव एरर एक्सेप्शन, एक मैंने चेक नंबर असाइन किया है एंड एक मैंने एरर असाइन किया है। तो लेट्स सी। सो एरर मैसेज एक फंक्शन होता है जो चलता है बताने के लिए कि नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता एसेंशियली। सो या अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मेन के अंदर चेक नंबर को कॉल किया एंड -5 है तो उसने मेरे को एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, नेगेटिव नंबर एक्सेप्शन। एंड हम चाहें तो इसका वो भी प्रिंट कर सकते हैं, ई डॉट एरर मैसेज। एरर मैसेज हमने ये डिफाइन किया। ई यहाँ पे बेसिकली एक इंस्टेंस है क्लास का जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है। ऑलमोस्ट सारे सिमिलर कंसेप्ट हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम। वेट, ये डिफाइन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कूल। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम डार्ट कोर, सो एसेंशियली मेरे को यहाँ पे डार्ट कोर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट आई डोंट नो ये इंपोर्ट हो सकता है या नहीं। ओके तो ये इंपोर्ट होने में दिक्कत हो रही है। एनीवेज, सो एसेंशियली हम उसको भी साथ में कर सकते हैं प्रिंट। सो अभी ये दिक्कत दे रहा है, इट्स फाइन। हम जब कोड करेंगे तो उसमें मैं और अच्छे से तुमको बता दूंगा कि अपनी खुद की एक्सेप्शन कैसे डिफाइन करते हैं वगैरह। सो नॉट अ बिग डील। एसेंशियली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि ट्राई कैच ब्लॉक कैसे यूज़ होता है, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करना आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यप, असम, आई एम हैप्पी दैट हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक दो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनाए हैं, विच इज़ क्रिएट अ क्लास फॉर वर्चुअल पेट। अगेन सेम तरीका होगा सॉल्व करने का क्वेश्चन। द पेट शुड हैव प्रॉपर्टीज लाइक नेम, एज एंड एनर्जी लेवल। तो नेम अगेन तुम गैस कर सकते हो क्या होगा, मैं तुमको नहीं बताऊंगा अभी। और एज क्या हो सकती है, कौन सा डेटा टाइप, एनर्जी लेवल कौन सा डेटा टाइप होगा, दिस वन इज ट्रिकी।
and methods to play with the pet which decreases energy. So for example, जैसे ही मैं बोलूँगा कि भाई पेट लेट्स प्ले, तो उसके बाद जैसे वो एक बार प्ले हो जाएगा तो जो एनर्जी लेवल है लेट्स से उसका पहले 10.0 था तो उसका 9.3 हो जाए. तो दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन. एंड फीड द पैड विच इंक्रीजेस एनर्जी. अगर तुम लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो इट्स फाइन, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं. एसेंशियली अगर ये जिसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है जो मैंने अभी पढ़ा है उनके लिए हैं असाइनमेंट्स. अगर तुम जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है इसको एक एक बार फिर से कर लो या दो दो बार फिर से कर लो विद द हेल्प ऑफ वीडियो या खुद से, जैसे भी इट्स मोर देन इनफ. इससे ज़्यादा जो भी हमको सीखना होगा वो हम अलोंग द प्रोसेस सीख जाएंगे. उसमें हमको खुद से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. एसेंशियली व्हाट आई वांट इज़ तुम लोगों का टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मोबाइल ऐप्स बिल्ड करना, बैक एंड कनेक्ट करना, प्यारे प्यारे यू आईज बनाना, फ्रंट एंड, मैं चाहता हूँ उसमें ज़्यादा स्पेंड हो. उसमें इतना ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है टाइम. कूल. सो अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो ये वाला क्वेश्चन कर सकता है. एंड टेम्परेचर कन्वर्जन का भी कर सकता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, जो भी चाहो वो कर सकते हो. कूल. सो या दैट्स इट. हमने ये वाला आई थिंक डार्ट के बारे में सब कुछ हमने सीख लिया इस वीडियो के अंदर. हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले सारी थ्योरी करी कि डार्ट क्या होता है एंड डार्ट क्यों होता है, वाई डार्ट. एंड उसके बाद हमने सीखा डार्ट की बेसिक सिंटैक्स, इफ एल्स स्टेटमेंट सीखा हमने, लूप्स कैसे चलाते हैं सीखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन लिस्ट, मैप्स और एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं. देन हमने प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का भी ट्राई किया इस वीडियो में. सो इसके थ्रू आई होप कि हमारी एक बहुत अच्छी फाउंडेशन सेट हो चुकी है फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस, जब हम एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे, मोबाइल ऐप्स बनाना शुरू करेंगे. ओके. सो अगर किसी को अगेन इंटरेस्ट हो तो ये असाइनमेंट्स करने का ना बट हाईली रिकमेंड कि अगर किसी को इंटरेस्ट है तो प्लीज़ करे. बट अगली वीडियो से पहले प्लीज़ आई वांट कि इन सब क्वेश्चंस को जो मैंने अभी करवाए हैं इनको प्लीज़ दो दो बार या तीन तीन बार देख के आना. बिकॉज अगर फाउंडेशंस वीक हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे मूव करना. ठीक है. तो उसको बस तुम दो तीन बार ट्राई कर लो एंड दैट्स इट. इन द नेक्स्ट वीडियो हम डेवलपर एनवायरनमेंट अपना प्रॉपर सेट करेंगे, VS कोड इंस्टॉल करेंगे, फ्लटर एसडीके इंस्टॉल करेंगे, एम्यूलेटर वगैरह चलाना सीखेंगे एंड बहुत मज़ा आएगा. मतलब लिटरली मैं तुमको बताऊंगा कि फ्लटर बॉर्न क्यों होता. सब एदा लवलेस कौन थी, चार्ल्स वेबेज ने कैसे अपना सबसे पहला इंजन बनाया था, एंड कैसे स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया एंड उसके बाद पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई. तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. ठीक है. सो ओके गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर तुमको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा प्लीज़ शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स प्लीज़. मेरे को ये बनाने में बहुत टाइम लगता है एंड तुम लोग लिटरली अभी देख सकते हो क्या टाइम हो रहा है. ठीक है. अभी इस समय 6:19 हो रहे हैं, सुबह के 6:19 हो रहे हैं. सो मैं पूरी रात चेक किया, बस मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया. अभी मेरा 10 बजे से पेपर है. सो मैं पेपर देने जाऊँगा. आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू गाइज बिकॉज आई प्रॉमिस्ड कि 15 के बाद वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगे. तो प्लीज़ शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स and subscribe to that button right now. It helps me, it motivates me to create more videos for you. Signing off. Bye bye.